Assalamualaikum. I'm making this video to show you guys how to adjust the date, adjust the missing dates in the returns data. So let's start with downloading the data. I'm taking the data from investing.com. Firstly, I will take the data of KSE 100 index because it provides the data for all the trading dates of the stock markets. So I'm taking the historical data for the 1 year data, which starts from August 21 to August 2022. I am setting the dates from here and then I'll apply it. To download the data, it is important to download it in ascending order. So here I'm clicking on the small arrows right beside the date. When I click, it turns into the ascending order. I'll download it. After downloading it, I am converting, because it's downloaded in CSV file, I'm converting it into Excel file. For Excel file, we'll go to the file, go to the save as option, browse to where you want to save it. To save it as a type, we need to click it and save it as a Excel workbook. I'll name it as KSE 100 index and then I'll save it. I have downloaded in the same way the data of Nestle, and I'll convert the data of Nestle same as I have converted the data of KSE 100 index for the same time period. I have downloaded it for the same time period. आपने दोनों वर्कबुक्स का टाइम पीरियड को सेम रखना है, बिकॉज अगर आप टाइम पीरियड सेम नहीं रखते हो तो हम डेट्स को एडजस्ट नहीं कर सकते अकॉर्डिंगली. सो now I need to adjust the date of Nestle company. First I will show you how many data we have in this Excel workbook of the Nestle company. It shows the count of 209 including the count of date cell. So if we exclude it, it will show that we have a count of 208 number of return values of the Nestle companies. And if we go to the Excel workbook of KSE 100 index, it shows the data of 269. That means 269 days तक trade हुआ है in the dates of 5 August 2021 to 5 August 2022. That means there is a missing value. There are missing values in Nestle's return data. So what we'll do is we'll copy the dates from KSE 100 index workbook and paste it in the Nestle's workbook in any of the column, but make sure कि हमारे पास 2 blanks column हो उससे पहले. ठीक है, I'll paste the date over here. We don't need the data, these datas, so I'll delete these cells. Right? Okay. What we need to do now is we are applying the function. The function is called match functions. Match functions, first we need to place is equals to, then write match, clicking on the match function. This is asking us that we have to select the lookup value. Basically आपने वो चीज़ mention करनी है, उस cell को select करना है जो आप check करना चाह रहे हो. So we need to check this date, the first date. ठीक है, in the lookup array of this. ठीक है, लुकअप अरे ऑफ दिस, इसके साथ हम डॉलर साइन ऐड कर देंगे, बिकॉज हमने हर दफ़ा अपनी लुकअप अरे को सेम रखना है, यानी हमने अपनी जितनी डेट्स हैं वो इस लुकअप अरे में चेक करनी है. देन प्लेस अ कॉमा एंड एग्जैक्ट मैच. एग्जैक्ट मैच हमें प्रोवाइड करेगा एग्जैक्टली सेम मैच चेक करेगा वो हमारी लुकअप अरे का विद द लुकअप वैल्यू. प्रेस एंटर. राइट, सो इट विल शो दैट 5th August is in this array, right, lookup array column. We'll just double click the cell. इससे हमारे सारे जो हैं वो नीचे तक सेम फार्मूला अप्लाई हो जाएगा. We'll go to the data and apply the descending order. right, डिसेंडिंग ऑर्डर से ये होगा कि हमारे पास सारी वो डेट्स ऊपर आ जाएंगी, यानी ये जो नॉट एप्लीकेबल का साइन दे रहा है, दैट मीन्स वो सारी हमारी ऊपर आ गई हैं जो डेट्स हमारी लुकअप अरे में नहीं थी. हम इन सारी डेट्स को कॉपी करेंगे एंड विल पेस्ट इट
under the dates of the Nestle. Since we don't need it now, so we'll delete it. Okay, what you need to do is select this column and select the ascending order. Okay, it will sort it out. Now you can see that there are missing cells, which shows that the days that were missing previously in the Nestle price return values, it is now fixed in the cells below, right? अब ये empty cells को हम किस तरह से जो है फिल कर सकते हैं, वो इस तरह कर सकते हैं बिकॉज अगर जिस दिन में ट्रेडिंग नहीं हुई तभी वो डेट हमारी मिसिंग थी, दैट मीन्स कि जिस दिन में ट्रेड नहीं हुआ वो प्रीवियस प्राइस वैल्यू ही कंटिन्यू हो रही थी. तो इसके लिए भी एक फंक्शन है हमारे पास. हम कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करेंगे या हम सिंपल आप जा सकते हो होम, सिलेक्ट एंड फाइंड एंड गो टू, राइट. गो टू में जाके आपके पास ये जो बॉक्स आना शुरू हो गया, इसमें आप स्पेशल को क्लिक करोगे एंड ब्लैंक्स को क्लिक करेंगे, देन ओके, राइट. अभी हमारे पास, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, हमने पहले अपने इस कॉलम को सिलेक्ट करना है टिल दी एंड, राइट, जस्ट दिस कॉलम, बिकॉज बाकी भी हमारे पास एम्प्टी कॉलम्स हैं तो वो सबको सिलेक्ट करना शुरू हो जाएगा. देन गो टू स्पेशल ब्लैंक्स एंड ओके, राइट. अभी हमारे पास सेल को सिलेक्ट कर रहा है इस तरह से. आपने क्या करना है, इज इक्वल्स टू select the cell before, like I am selecting the 30th August value. Press Control and enter simultaneously. इससे हमारे साथ ये हुआ है कि हमारे पास जितने एम्प्टी सेल्स थे, जैसे ये उसमें प्रीवियस वैल्यू ऐड हो गई है, ठीक है. एंड देन वी आर डन विद आवर वर्क.